Now we are starting for the particularly fifth unit part of Verilog and VHDL. As we discussed in the last class regarding FPG and ASIC and difference between both of them. My voice is audible? Yes, beta. And slides Yes, are ma'am. okay. And slides are visible. Yes, ma'am. Okay. Now next week we don't have a class because I need to attend one FDP and ITTR Bhopal. So next week you are free, but yes, of course, I have given you assignment, so you may try to complete it. And if you have any doubt, you can ask. So today we are taking 2 classes. I will give you 10 minutes break. आज अपन दोनों ही VLSI डिजाइन की लेक्चर लेंगे और टुमारो वी विल हैव सस्टेनेबल इंजीनियरिंग की 2 क्लासेस. ठीक है, फिर अपनी क्लास जो नेक्स्ट है वो 15 अगस्त के बाद रहे. ठीक है. Now, last class we end up with the FPGA design tool. Like there are 2 important designs like VHDL and Verilog. Both are the software programming language. First of all, just a little bit description about the Verilog. Like it is originated in 1983 at Gateway Design Automation. Or it is accepted IEEE standard also, and in 1995 original standard, that is IEEE 13649995 was approved. I just suggest you to write down this standard. Same thing we will learn about the VHDL also. This is a particular that Verilog में Gateway Design Automation ने applied for IEEE standard. This particular number designate that in 1995 finally Verilog got its standard authentication that people can use this language with certain its appropriate standards and specification. Fine. And finally in 2001, what happened? The latest Verilog HDL standard that made significant improvements to the original standard. ठीक है. और ये जो लैंग्वेज है जनरली तुम देखोगे एकेडमिक में जब भी आया है VOFC लैब या जिसमें इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम VHDL ही यूज करें, बट VHDL एकेडमिक पर्पज से इजी गोइंग है. Verilog is industrial purpose, but we cannot specific that it is only industrial purpose. But yes, of course, the number of lines used to get reduced in a Verilog. बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि Verilog ज़्यादा एडवांस है या ये है. But yes, of course, Verilog is bit user friendly than the VHDL. Okay, is it clear बेटा? ये तुम्हें नोट करना है और should we move ahead? Is it clear? Verilog में तुम्हें 3 चीजें ध्यान रखनी है कि ये 1983 में ओरिजिनेट हुआ. दिस गेटवे डिजाइन ऑटोमेशन GDA originated it, and IEEE standard it got in 95, and the Verilog IEEE standard is 1364 और 2001 में इसका लेटेस्ट वर्जन और आया. ठीक है. नाउ कम सेकेंड VHDL. इसकी प्रोग्रामिंग आज अपन स्टार्ट करेंगे. सो VHDL stands for very high. I just suggest you to write down its full form. HDL तो होता है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. V stands for what? Very high speed integrated circuit. So very high speed integrated circuit, that is its full form, and it is a language for describing what? So digital electronic circuit. Digital electron circuit इसमें describe होते हैं, and it arose out of the United States government's very high speed integrated circuit program initiated in 1980. Because many a time in lab, this particular full form will be useful in your lab purpose. Many times external ask, what is the full form of? Particularly VHSC. Sorry, VHDL. So V stand for VHSC, that is very high speed integrated circuit.
and HDL for the hardware description language. Is it clear? ये फुल फॉर्म लिख लिया तुम लोगों ने? जल्दी बोलो. Full form has been written by you. और एक वो क्या नाम है, कृष्ण गोपाल बघेला और नीरज को बोलना है कि उनके जो कोर्स एग्जिट फॉर्म है वो विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो दे जस्ट मेल मी देयर कोर्स एग्जिट फॉर्म. कृष्ण गोपाल बघेला एंड नीरज शर्मा. ठीक है. Now this is important. Generally in this unit difference could be asked in your exams, like difference between full custom, semi custom, VHDL versus Verilog. This I suggest you to write down and I will give you 2 to 3 minutes also for that. So VHDL और Verilog दोनों ही hardware description languages हैं for the digital circuitry. Fine. So VHDL has a slightly wider scope, whereas Verilog has restricted scope. VHDL is a better behaved than Verilog, whereas it is well behaved. VHDL is a bit harder to simulate, whereas Verilog simulation is very easy. VHDL has fewer built-in facilities for hardware modeling, whereas Verilog might end up in the large and difficult to trace. ये तुम लोग लिख लो. दोनों ही अपनी अपनी जगह बेटर हैं. लाइक कई जगह वेरिलॉग में रिस्ट्रिक्शंस हैं, कई जगह VHDL का वाइडर स्कोप है और सिमुलेट करना थोड़ा VHDL को हार्डर है, जबकि वेरिलॉग इजीली हो जाता है. ठीक है, लिखो जल्दी. लिख लिया बेटा? Say yes or no so that I can move ahead. आज अपन को प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करनी है.
यस now other parameters, because that is not only these 4 points, remaining are also there. That's why I'm telling you, write down fast. Now VHDL is government developed, whereas Verilog is commercial developed. Means that is a thing, particularly that Verilog is use industrial purpose, whereas VHDL is government developed. VHDL is a Pascal and ADA based, Verilog is C based. VHDL is a strongly type, whereas Verilog is midly type. VHDL is difficult to learn, whereas Verilog is easier to learn. And VHDL is more powerful, whereas Verilog is less powerful. Why voice is not audible? Might be Payal, you have I must say network issue. Otherwise बाकी सबको तो सुनाई दे रही है. Let's try to. Okay. हाँ नीरज, क्या हुआ बोलो. यस नीरज. चलो ये बाकी भी तुम लोग लिख लो. ऐसा करो, जिनको वॉइस नहीं क्लियर हो रही है, just left once the meeting and rejoin. Sometime that might improve it. Do it fast. Once left the meeting and join again. ठीक है पायल, ये पॉइंट्स भी तुम लोग लिख लो. अगर कहीं मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ कि लिखो, मीन्स इसम और अदर वेयर इट इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फाइन. और मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में इसके डिफरेंसेस कट शॉर्ट किए हैं. ठीक है. और जैसा कि हम लास्ट में लिख रहे हैं, VHDL is more powerful than the Verilog. That is one of the things that we go for the VHDL in most of the our academic purpose. ठीक है. या तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इतना टाइम लग रहा है तो. ये लास्ट वन स्लाइड है. टोटल इसमें 9 डिफरेंस है VHDL वर्सेस Verilog. अब अश्विनी जब हो जाए तो वापस इन्फॉर्म करो तुमने लिख लिया है, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग. ओके ना, लिखने की ट्राई करो, लेकिन जिनकी स्पीड बहुत स्लो है, दे कैन डू वन थिंग, दैट दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है. ये भी कंप्लीट कर ली, लिख लिया तुम लोगों ने. ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड, जैसे मैंने कहा, फुल कस्टम, सेमी कस्टम, FPGA, ASIC,
VHDL Verilog. These are most genuinely asked difference from your RTO point of view. ठीक है, I think you complete this. अगर नहीं करा है तो मुझे बताओ जल्दी, नहीं तो फिर भी move ahead. Okay. Now, some merits of FPGA designs are there that we can give at a look. Although it is not very important, but yes, of course, we must know. क्योंकि आजकल जितनी भी हमारी HDL या हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन बेस्ड डिजाइनिंग हो रही है, उसमें हम जो किट यूज करते हैं या हार्डवेयर बोर्ड यूज करते हैं VLSI में, दैट इज बेस्ड ऑन FPGA. 2 और 3 तो अपनी लैब में भी अवेलेबल है. सो मेरिट्स ऑफ FPGA इज फास्टर टाइम टू मार्केट. मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम और है वो काफी अच्छा है. नो NRE. NRE मीन्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मीन्स ASIC जैसा नाम से ही क्लियर है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक. आई एम डिजाइनिंग दैट पर्टिकुलर सिस्टम फॉर वन पर्टिकुलर एप्लीकेशन. whereas FPGA में आई कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स वन बाय वन. तो ये इसमें जो है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इसलिए कम आता है. Design cycle is very simple, more predictable project cycle, field reprogrammability. That is a main feature. These two are the main feature. Field reprogrammability and reusability that made the FPGA most versatile. These points you can return in the particular question to be asked why FPGA is more preferable than ASIC design. In that we can contact. ठीक है, कि ये रीप्रोग्रामेबिलिटी है, इसमें रीयूजेबिलिटी है ना. फाइन. डीमेरिट्स की जब बात आती है तो यस ऑफ कोर्स पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है एंड वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन FPGA. FPGA लिमिट्स द डिजाइन साइज ऑल्सो. और जहां तक अपने ये इट इज गुड फॉर ओनली लो क्वांटिटी प्रोडक्शन. लो क्वांटिटी के जो प्रोडक्शन होते हैं उसके लिए ये सही है. बाकी हाँ इसका कंजम्पशन वगैरह हाई है. ठीक है. As far as applications are concerned, sometimes this simple question could be asked. What do you understand by FPGA? Write down its merit, demerits, and explain its application. That's why I introduce it. Otherwise, very rare I used to explain because I consider this to be a theoretical topic that you can learn by the books and all. But yes, of course, FPGA applications are more versatile, like implementation of random logic, like easier changes at system level. It can eliminate need for full custom chips. It is a prototype. Prototype means ensemble of gate arrays used to emulate a circuit to be manufactured. And it get more better, faster debugging than possible with the simulation. As far as reconfigurable hardware is concerned, one hardware block used to implement more than one function. Functions must be mutually exclusive in a time. RAM based only option is there, and it can greatly reduce cost while enhancing flexibility. And as far as the special purpose computation is concerned, so hardware dedicated to solving one problem, accelerator attached to general purpose. You can take a screenshot or otherwise you can get many more application in the book as well. Fine, because we are moving ahead. What I planning, this particular lecture can finish this theoretical topic so that in next lecture I just start your VHD. ठीक है. ये ASIC और FPGA का भी डिफरेंस है. इसमें मैं तुम्हें टाइम दूंगी. सी मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन that you need to be go through both for ASIC and FPGA. Now comes the main difference between the ASIC and FPGA. And one more thing I am telling, अगर ASIC और FPGA ना पूछ के अगर full custom और semi custom भी पूछ लिया जाता है, so in that case also you need to be write the same thing which you have being written in ASIC and FPGA. So what is the main feature of ASIC?
ASIC is a high performance, low power, low cost, whereas FPGA is off the shelf, low development cost, short time to the market, reconfigurability. These are the particular difference. Apart from this is a flow chart of uh, things to be moved. I will give you time to draw. First, you write down this. The high performance है, low development cost, low power, short time to the market, low cost है, and this is a reconfigure. ठीक है? Either you can take the screenshot of that. That can also work. As far as its design flow is concerned, see, first of all, I am just explaining you this. This is very important. Sometime individual flow, design flow could be asked. So this both either I am giving you 3 to 4 minutes, you can draw it, or otherwise take the screenshot also. But one among them could be asked in your RTU exam. What is the main flow of ASIC design? That is functional specification, then HDL. After that, behavioral in hardware description language, what we used to do when there is no syntax error, then behavioral simulation can take place. After successfully simulation, synthesis could be moved on. So in a synthesis, static time analysis, equivalence checking is there, DFT insertion and all. Then floor planning, place and route, and finally verification in the circuitry. What the steps used to take place in a place and route means where I need to place the component and make a route that depend on the static timing analysis. And equivalence checking, verification of second and third order effect. And in between the floor planning and place and route, basically hand off to foundry, that is wait for 1 to 3 months. That is the time taking. That is why it is used to be tell that ASIC design processing is a time taking. Also, it is not justified that whether my circuit is proper or not, because we are doing verification and all at the last moment after doing floor planning, place and route, everything. Fine. As far as FPGA is concerned, FPGA, the functional specifications are there. Then after getting the specification, we write the code in the HDL, behavioral simulation. Till this much process, it is exactly the same, whatever in the ASIC also. Fine. After that, synthesis also fine. Synthesis भी same वैसे ही होता है कि हाँ HDL के बाद हमें करना है. But then here it floor planning and then place and route used to be there. Where here first place and route is there, static and timing analysis used to be done. Then download and verify the circuit, and then finally it used to go for the fabrication. ठीक है, बना लो इसको, या ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ करो, अदरवाइज you can take a screenshot also. I'm giving you 2 to 3 minutes. Meanwhile, you can give your attendance. Achal, Ashwini, yes, please. Present, ma'am. Achal, Bhavna, Present, ma'am. Mohit, Mandeep, Mandeep present, ma'am. Present, ma'am. Mohit. Siddharth,
सिद्धार्थ, शिवांगी, Present, ma'am. Shivangi, present, ma'am. वंदना, Vandana, present, ma'am. पायल आई तो थी, अंकित शर्मा और पायल ने भी तो ज्वाइन किया था. Okay, have you drawn this diagram? बना लो. Now after this, I'm giving you 10 minutes break. Okay? By 12:05, again we will gather for the next lecture of same VLSI design. And that is very important. Remaining students को भी inform करो क्योंकि वो तुम्हारे lab point of view से भी important है. ठीक है? Ma'am, present, ma'am. पायल. Payal, yes, ma'am. Okay. ठीक है? So that's it all about that is all about अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा इसमें 5th unit में that all were the theoretical topic like regarding electronic computer aided design toolbox front end back end. front end क्या है? VHDL जो अपन अभी start करेंगे that is our front end tool of EK and back end में जो है वो Tanner EDA schematic layout वो तुम्हारी 3rd unit में आए. ASIC is a customized design, full customized, and FPGA is semi-customized. And difference between VHDL, Verilog, ASIC, FPGA, their design flow, that is all very important. Now we are starting this one and it is going to take like 4 to 5 lectures. Fine. और तुम्हें जो असाइनमेंट भी है वो इस यूनिट में हो जाएगी तभी फिनिश जमा करना है. आई सपोज 20 अगस्त दिए मैंने डेट. ठीक है. अब VHDL अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है. सो वी आर नॉट मूविंग विथ पर्टिकुलर लाइक कहना चाहिए कि स्टार्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट. वी जस्ट डील इट विथ अ पर्टिकुलर टॉपिक इन द सब यूनिट. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग वेरी बेसिक्स और जैसे अपन डेटा टाइप डेटा ऑब्जेक्ट क्योंकि इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इसमें पूरा सेमेस्टर निकल जाएगा. सो बेसिकली आई एम स्टार्टिंग विद अ प्रोग्राम. जो नेसेसरी और नीडी चीजें वैसे भी 2-3 प्रोग्राम में आज अपन करेंगे एंड 2-3 आई विल टेल यू टू ड्रॉ. तो वो हो जाएंगे तुम. ठीक है. सो हियर आई एम गिविंग यू ब्रेक फॉर 10 मिनट्स और उसके बाद अगेन वी आर जस्ट हमें जो प्रोग्रामिंग करनी है हम आज अपन लॉजिक गेट्स के बारे में करेंगे. ठीक है. एंड गेट से अपन स्टार्ट करें. इट इज वेरी सिंपल. Some or another where if I require certain parameters then we are also going to discuss. But हाँ आज logic gates हो जाएंगे and from here now onwards be ready with your copy pen because I will let you allow to share your screen and you need to show कि हमने ये बनाया है. ठीक है. आज तो चलो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी वीडी की होगी क्योंकि प्रोग्रामिंग अगर सिर्फ ओनली थ्योरी में दिस पार्ट इज यूज टू बी देयर देन आई नेवर यूज टू पैनिक यू बट इट इज इन द लैब सेशन ऑल्सो. गॉड नोज व्हाट विल बी हैपन इन द लैब इन सच पैंडेमिक कंडीशन बट लेट मी प्रिपेयर एटलीस्ट प्रोग्रामिंग पार्ट. ठीक है. चलो अगेन ज्वाइन बाय 12:05.